स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके चैनल KCL ट्यूटोरियल। और जी हाँ, आज हम लोग जैसा कि आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा था उसी तरह से हम फिर लेकर आ रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज, जिसमें कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं। जी, ये सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल से निकाले गए होते हैं, जो कि PCI के हिसाब सारे भारत की यूनिवर्सिटी के हिसाब से होते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। इसमें तो कुल 30 से 32 क्वेश्चन है, बारी बारी से देख लेंगे। आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑलरेडी नोट्स अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे सर्च करके इनके आंसर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स। व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट? बी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन IR absorption band. C, give the principle of mass spectrometer. D, explain bathochromic and hypsochromic shift. E, give the application of gel electrophoresis. F, differentiate between quality control and quality assurance. G, what is total quality management? H, give the application of 13C NMR. I, discuss fast atom bombardment ionization technique. J, define phosphorescence. 10 marks question. 2, explain the scanning electron microscopic and transmissions electron microscopy. 3, discuss Massey-Lefty arrangement. Add a note on MALDI. 4th, elucidate the principle and application of 1H NMR. 5, explain the IR, NMR and mass spectral interpretations of ethanol. 6, discuss basic concept and types of validation. 7, elucidate Lambert-Beer law. Add a note on application of UV spectroscopy. 8, discuss instrumentation and application of IR spectroscopy. 9, explain principle of mass spectrometry and discuss fragmentation rules. 10, explain ISO 9000 series. 11, explain quality audit and discuss its types. 12, discuss batch manufacturing record and master formula record. 13, give the principal instrumentations and application of atomic absorption spectroscopy. 14, give the principal instrumentation and application of flame photometry. 15, discuss instrumentation of 1 hydrogen NMR spectroscopy. Add a note on solvent used in 1 hydrogen NMR spectroscopy. 16, what is a chemical shift? Discuss factor affecting chemical shift. 5 marks question. 17, define chromophoresis and with suitable example. 18, discuss the different light source used in UV visual spectroscopy. 19, what do you mean by molecular ion peak? 20, differentiate shielding and de-shielding effect. 21, explain concept of total quality management. 22, name different validation parameters. 23rd, explain the term quenching. 24th, explain different types of electronic transitions in UV visible spectroscopy. 25, what is the importance of ionization technique in mass spectroscopy? Explain any two ionization technique. 26, discuss different modes of molecular vibration in IR spectroscopy. 27, write a note on scanning electron microscopy. 28, give instrumentation of double beam spectrophotometer with suitable diagram. 29, write a note on FTIR. 30, write a note on gel electrophoresis. 31st, write a detail about the detectors used in gas chromatography. 32, explain about the principle and instrumentation of mass spectrometer. 33, discuss the principle and application of fluorimetry. Thank you.